everyone, I am Megha Pathak from DPS Sardani Lamachor, your bio teacher. Children, today we are going to discuss the topic phanerogams. In our previous video we have discussed about cryptogams. So let's study. Phanerogams are the plants that bear seeds. So they are categorized into two groups, gymnosperms and angiosperms. Children, what are gymnosperms? They bear seeds but their seeds are naked. Means seeds are not inside the fruits. While in angiosperms, seeds are present inside fruits. Okay. Again, angiosperms are classified into two groups, monocot and dicots. So children, about monocots and dicots we will study further in this video. Now let's study about gymnosperms. See, gymno means naked and sperma means seeds. So gymnosperms are the plants that bear seeds, but their seeds are not inside fruits. Okay. And these plants are evergreen, perennial and woody. Evergreen plants होते हैं, perennial means these plants live for several years, and these are woody plants. For example, cycas, pinus, deodar. These are the examples of gymnosperms. Children, just now we have studied about gymnosperms. So now let's study about angiosperms. Angio means covered and sperma means seeds. So angiosperms are the plants in which seed develop inside the fruit. Okay, and these are also called flowering plants. And the seed develop inside an ovary which is modified to become a fruit. See, ovary, it is the female reproductive part. तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा, जो सीड है ये ओवरी में के अंदर डेवलप होता है, जो कि बाद में मॉडिफाई होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड कॉटिलीडन, एंड कॉटिलीडन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स. कॉटिलीडन्स they are the part of the embryo and they are also called seed leaves because in certain cases they emerge and become green to function as leaves. That's why they are called seed leaves. And in angiosperms, a seed may have 2 or 1 cotyledon. On the basis of cotyledon number, angiosperms have been divided into two groups, monocots and dicots. Plants with seeds having a single cotyledon, they are called monocotyledons or monocots. Okay, and the plants with seeds having 2 cotyledons, they are called dicots. Children, now let's study about monocot and dicot plants in detail. Children, monocot plants are like maize, wheat, rice, while dicot plants, their examples are mustard, gram, किडनी बीन्स. देखिए राजमा, चना और मस्टर्ड, इन सभी के सीड्स में अगर आप देखेंगे देयर आर 2 cotyledons present, while in monocot plants only 1 cotyledon is present. So in dicot plants, embryo bears 2 cotyledons. Okay, and children, dicot plants, they have रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स. जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वाइल इन मोनोकॉट प्लांट्स लीव्स शो पैरेलल वेनेशन. चिल्ड्रन, एज यू कैन सी द पिक्चर विच इज प्रेजेंटिंग ऑन द स्क्रीन, इन मोनोकॉट प्लांट्स vascular bundles they are scattered, while in dicot plants vascular bundles like xylem and phloem they are arranged in a ring. And children, if we compare the flowers of monocot and dicot plants, so the flower parts in monocot plants, they are present in multiples of 3, while in dicot plants, flower parts are in the multiples of 5 or 4. Children, here multiples means जो भी flower parts है ये मोनोकॉट प्लांट्स में 3 के मल्टीपल्स में होंगे, मीन्स देयर नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ 3, वाइल इन डाइकॉट प्लांट्स फ्लावर पार्ट्स उनका नंबर कितना होगा 5 या फिर 4 के मल्टीपल्स, मीन्स देयर नंबर विल बी मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5. चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड प्लांट किंगडम, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनिमल किंगडम. ओके, किंगडम एनिमेलिया इज द किंगडम ऑफ वॉल-लेस यूकैरियोटिक, multicellular and heterotrophic organisms, and they have holozoic mode of nutrition. means जो इस फाइलम इस किंगडम में जो एनिमल्स होते हैं उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मीन्स उनमें डाइजेशन के
न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ओके children, before studying about different phylums we will study the important terms. जो कि इन फाइलम्स को जब हम स्टडी करेंगे उनमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे, बिकॉज यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर फर्स्ट टाइम एंड देयर आर सम टर्म्स दैट यू हैव नॉट स्टडीड बिफोर, सो वी आर स्टडिंग अबाउट दीज टर्म्स. चिल्ड्रन, फर्स्ट टर्म इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो एनिमल्स हैं उनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो उनमें जो सेल्स हैं वही एक तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं. मीन्स टिश्यूज आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड. ओके different types of cells are present. For example, like Porifera. So we will study about phylum Porifera further in this chapter. And second term is tissue level organization. Like multicellular body has cell organized into tissues. Okay? But organs are absent. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते. एंड थर्ड इज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. Like cells, they are organized into tissues, and tissues, they are organized into organs, but organ system is absent. Okay, and some organisms, they have organ system level organization. जैसे human beings, हम में different organ systems हैं. बहुत सारे organ, different organs मिलकर के एक organ system बनाते हैं, जैसे digestive system, respiratory system. Okay, now next term is body symmetry. Children, you have studied about symmetry in mathematics. So it is similarity in arrangement of parts. Absence of any repetition or similarity is called asymmetry. So children, symmetry is of two types, radial and bilateral. So what is radial symmetry? In radial symmetry, body is cylindrical and similar parts occur all around the central axis. Any vertical plane passing through the central axis will divide the body into two equal halves. देखिए जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें सेंट्रल एक्सिस में से कोई भी जो पासिंग लाइन होती है बॉडी में से, that divides the body into two equal halves. Okay? And in bilateral symmetry, body has a head and organs and limbs are paired. And they are arranged laterally, and body is divisible into two equal halves by only one plane. देखिए बाइलेटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिज्म में हेड भी होता है और ऑर्गन्स होते हैं और लिम्स, ये सब पेयर्स होते हैं. मोस्टली द ऑर्गन्स आर पेयर्ड. जैसे अगर हम में देखें तो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स. ओके, एंड जो भी ऑर्गन्स है, जो मेन हमारी जो पासिंग लाइन है, इमेजिनरी लाइन that passes from the middle of the body, and it divides the body into two equal halves. For example, fish, frog, earthworm, humans, we have bilateral symmetry, and radial symmetry is found in hydra, starfish. Okay, now next important term is germ layers or germinal layers. Germ layers are the primary layers that differentiate in the embryo, and all the tissues and organs of the animal body develop from them. And germ layers can be 2 or 3 in number. On the basis, the animals are of two types, diploblastic and triploblastic. देखिए जो germ layers है, germinal layers हैं, ये 2 और या फिर 3 हो सकती हैं. On the basis of their number, animals are categorized into two types, diploblastic and triploblastic. Diploblastic animals have only two germinal layers, ectoderm and endoderm, and mesoderm is absent. Okay, and triploblastic animals have three germinal layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Diploblastic animals में केवल 2 germinal layers होती हैं, ectoderm and endoderm. और जो triploblastic animals होते हैं उनमें 3 germinal layers होती हैं, ectoderm, mesoderm और थर्ड लेयर इज एंडोडर्म.
Now children, next important term is coelom. Coelom, or we call it body cavity. Children, coelom is a mesoderm lined fluid filled space that occurs between alimentary canal and body wall, which provides shock proof environment to various body organs. सीलोम मेसोडर्म लाइंड एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में होता है और जिससे जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन मिलता है. मीन्स इट प्रोवाइड्स शॉक प्रूफ एनवायरनमेंट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. एंड डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस, presence and nature of coelom, animals they are of three types: acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. Children, as you can see the picture which is presenting on the screen, acoelomate organisms, they do not have coelom, means coelom is absent in them. Okay, and pseudocoelomate, in pseudocoelomate organisms a cavity is present but it is not lined by mesoderm. In these organisms, mesoderm occurs but forms small separate pouches, as you can see in the picture. Now coelomate. In coelomate organisms, a true coelom, a true body cavity which is lined by mesoderm is present. और जो coelomate organisms होते हैं उनमें एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि mesoderm से लाइंड होती है. So children, these are the new terms which are used to explain the characteristics of different animal phylums.